पास्ट 10 years के पीटी पेपर्स पॉलिटी क्वेश्चंस विच विल बी कवर्ड, इनको हम करेंगे एंड इनको हम कवर करेंगे थीमेटिकली, मतलब थीम वाइज, मतलब काइंड ऑफ सब्जेक्ट वाइज आप समझ लीजिए। एंड द चैप्टर्स जो अभी हम कवर करने वाले हैं वो ये हैं: द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the salient features of the constitution and political theories, preamble and political theories. Political theories जो यहाँ पे कवर एक साथ ही हो जाएंगे, right? Union and its territory, citizenship, fundamental rights, DPSP which is basically directive principles of state policy. वो क्या है exactly वो सब मैं आपको डिटेल में करा दूंगा बाद में। Alright. Fundamental duties, mixed questions कई बार आते हैं fundamental duties and fundamental rights पे, दोनों में फर्क क्या होता है, कौन सा enforceable है कौन सा नहीं है, वो भी हम कर लेंगे। Amendment to the Constitution, system of government, parliamentary system which we have in India, which was also called the Westminster model, federal system, emergency provision, central government, president and prime minister, council of ministers, central committees, parliament. So we'll be covering all of these topics one by one, and we'll be doing questions जो इन पे last 10 years के polity में आ चुके हैं। Constitutional government means, this came in 2021, a representative government of a nation with federal structure, a government whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoys real powers, a government limited in the terms of the constitution. Alright. इसका आंसर है, हाँ इस बार मेरा काम कर गया, डी। आंसर चॉइस इज डी। चलिए जी इसे एक्सप्लेन कर। Wrong, 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 right. Let's go first choice. A representative government of a nation with federal structure. Yeah, that's wrong. So, ideally, constitutional government is the representative one, obviously, but federal structure, yeah, that's not necessary. In a constitutional government, हमें idea है liberty, justice, equality, fraternity का, उसके लिए federal structure होना जरूरी नहीं है. Alright. You can have a decentralized structure as well, and you can have a federal structure. What that doesn't matter. Actually, I should explain ना, फिर थोड़ा सा federal structure और union structure, federal और union structure क्या हो गया? ठीक है. So there are two structures. There is a centralized, there is a federal structure, and there is a, this is also called a decentralized. And then there is a union structure. This is centralized. ठीक है, and ये मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा एक सेकंड में। इंडिया इज क्वाज़ी फेडरल। Centralized versus decentralized. Actually, union तो wrong word होगा, unitary होगा ये. Let me just fix that for you, please. Unitary. So there are two structures. There is a federal structure, and then there is a unitary structure. Federal structure is decentralized, and unitary structure is centralized. Example भी ले लेते हैं इसका हम. Unitary में क्या आएगा? यूनिटरी में आजकल करंट, फेडरल में तो सिंपल है यूएसए, ठीक है। यूनिटरी में हम चाइना ले लेते हैं। क्वाज़ी फेडरल इज इंडिया। ऑलराइट, फेडरल का मीनिंग यूजुअली ये हुआ कि भैया आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, but most of the power is decentralized. It is given to the local states. Local राज्यों को दे रखी होती है ज़्यादातर पावर। The central government has minimal, कम से कम पावर रखने का आइडिया रखते हैं वो। तो फॉर एग्जाम्पल फॉरेन करेंसी हैंडलिंग, डिफेंस, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन, वो भैया अपना ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो हैंडल करेंगे हमारे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच अफेक्ट द पीपल। तो डिसेंट्रलाइज कर दी, मतलब एक स्टेट को लेट्स से एम्फोसिस देना है ऑन एजुकेशन, तो भाई वो उनकी चॉइस है। दूसरे स्टेट को देना भी, हमें एम्फोसिस एजुकेशन पे नहीं देना,
हमको एम्फोसिस देना है लेट्स से ऑन सेटिंग अप फैक्ट्रीज, तो वो उनकी चॉइस है और उनके लोगों को अगर पसंद, दे कैन वोट द पीपल आउट एंड गेट सम अदर गवर्नमेंट इन. सो दैट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर. द एग्जांपल ऑफ दैट इज यूएसए, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, मतलब स्टेट्स हैव मोस्ट ऑफ द पावर. यूनिटरी तो भैया एक सेंट्रलाइज्ड पावर, सेंटर ये सब कुछ डिसाइड करेगा. एग्जाम्पल दैट इज चाइना, अ वेरी वेरी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड उसके अंदर चाइना में तो इतना यूनिटरी कि जो उनके स्टेट्स होते हैं उन्हें प्रोविंसेस बोलते हैं. सो प्रोविंसेस के अंदर यू कैनॉट इवन मूव फ्रॉम लेट्स से वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन चाइना. दैट्स द सिचुएशन. इट्स नॉट लाइक कि भाई तो फ्रीडम्स हैं, लोगों के पास आराम से ट्रैवल कर लें, ये चलो स्टेट टू स्टेट मैटर है वो अपने में रेगुलेट कर लें, हाँ नथिंग डूइंग, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है. इंडिया एज पर प्रोफेसर K.C. Weir, W-H-E-A-R-E, K.C. Weir. As per Professor K.C. Weir, one second guys, ये मैंने थोड़ा सा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करके कर दिया है यहाँ पर जिससे क्लियर हो जाए. India is quasi-federal, right in the middle. It's not very unitary, it's not completely unitary and it's not completely federal. We are somewhere in the middle. तो हमने quasi-federal कहा था. I mean, central government has a lot of powers, so do the state governments have lots of powers. ठीक है, it works both ways. Okie dokie. So, coming back to the idea, first choice, it is not necessary for you to have a federal structure in a constitutional government. A constitutional government which reflects the rights and liberties of people can have federal, unitary, quasi-federal, doesn't matter. First is wrong. A government whose head enjoys nominal powers, and second वाला answer choice number C for cat भी एक साथ ले लेते हैं. A government whose head enjoys real powers, ये दोनों ने एक साथ ले लिया. क्या दोनों गलत है. अब नॉमिनल पावर्स हो, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या हेड ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स हो, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. बाबा रे, प्रेसिडेंट यूएसए पास तो बहुत पावर्स होती हैं, ह्यूज पावर्स. I mean, technically, the president of USA cannot even declare war on other countries without the express permission of the US Congress. US Congress is not the Congress party types, but उनके parliament को Congress बोलते हैं. But फिर भी वो कर लेते हैं. I think Vietnam War में Congress की permission नहीं ली गई थी. फिर बिल क्लिंटन जो 90s में interference करी थी in the then Yugoslavia वगैरह, in the Balkan Wars, सर्बिया वगैरह में, उसमें भी permission नहीं ली थी. तो anyways, so head of the government having real powers, nominal powers is not relevant, doesn't matter. So ये दोनों आंसर चॉइस भी गलत हो गई हमारी. बचा फिर डी, a government limited by the terms of the constitution. Now this is the entire game. The government का purpose in a constitutional government is not for the propagation of the authority of the state or of the government. The government has to be for the people, by the people, for the people, with the people. Abraham Lincoln ने कहा था ना गेटिसबर्ग एड्रेस में, democracy is by the people, of the people, for the people. Anyways, so a government limited in terms of the constitution, so that the government does not have unlimited powers to do whatever it wants to trample on the rights of the people. Hence, the answer choice is